Namaskar. Here is your first question. Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? Let's see. Yes, the Government of India Act 1935. The monopoly of India trade of the East India Company was abolished by the ईस्ट इंडिया का कंपनी का मोनोपोली था ट्रेड का ऊपर ओके उसको एबोलिश किया है सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन यस चार्टर एक्ट 1813 टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेर क्रिएटेड बाय यस फ्रेंड very important question yes the Indian Independent Act ये एक्ट का हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Yes, it was 1949 and 26 जनवरी 1950 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया The Indian Independent Bill received by Royal Assent on इंग्लैंड का रॉयल जो इनका परमिशन कब मिला हमें यस जुलाई 18 1947 How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formation of Indian Constitution? Yes, right option is 11 sessions. How much time of Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? Another very important question. कितना टाइम लगा था फ्रेंड्स यस करेक्ट आंसर इज 2 years 11 months 18 days the number of members included in the constitution drafting committee was कितना मेंबर्स थे फ्रेंड्स ये अवेयर होना चाहिए था So let's see. Yes, there were 7 members. Who called Indian federalism as the cooperative federalism? Central state relation, federal country. So G. Austin. The Constitution of India is yes क्या लगता है फ्रेंड्स रिजिड है फ्लेक्सिबल है yes neither too rigid nor too flexible so it is partly rigid and partly flexible the concept of judicial review of our constitution has been taken from USA. The federal system with a strong center has been borrowed by the Indian Constitution from हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट तो कहाँ से लिया गया है यस फ्रॉम कनाडा अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड ओके इम्पीचमेंट मोशन प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं तो यस कौन सा आर्टिकल में है ये यस इट इज आर्टिकल 61
By which name is our country mentioned in the constitution? Yes, friend. Very interesting question. Yes, it is India and Bharat. The number of union territories in India is yes, friend. At present, there are 9 union territories. जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसको 2 पार्ट बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सो वी आर हैविंग 9 यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट Sikkim was made an integral part of India under the yes which amendment yes it is 36th amendment who consider the right to constitutional remedies as very heart and soul of the Indian Constitution. ये right to remedies, constitutional remedies है, इसको heart and soul बोला था, किसने बोला था ये? So right option is yes, it's B.R. Ambedkar. Fundamental rights are not given to yes फंडामेंटल राइट्स आप जानते हो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स किसको नहीं मिलता है yes those who are political sufferers. Which of the following articles of Indian Constitution guarantees freedom of press? 4 पिलर बोलते हैं ना जिसको हम लोग Yes, it is Article 19. Right to equality find a place in the Constitution under all are equal. ये आपने डेफिनेटली सुना है तो ये हमें कहाँ मिलता है कौन सा आर्टिकल्स में Yes, it is Article 15. How many fundamental duties are there in the Indian Constitution? So beside 6 fundamental rights, we are having fundamental duties also. So कितना है friends? Yes, there are 11 fundamental duties. In which year fundamental duties of citizen were introduced by 42nd Amendment? Yes, it was 1976. The vacancy of the office of the President of India must be filled up within yes friend President का सीट अगर वैकेंट हो गया तो हमें yes within 6 month का अंदर में इसको फिल अप करना चाहिए. Who among the following is constitutionally empowered to declare a geographical area as a scheduled area? तो किसका पास पावर है फ्रेंड्स जो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का yes is president of India. So here is your next question. Which of the following prime minister never faced the parliament during the tenure? Very interesting question. प्राइम मिनिस्टर तो बन गए लेकिन वो कभी राज्यसभा या लोकसभा नहीं जा पाए. Yes friend. So it was none other than चौधरी चरण सिंह. सो दीज आर द 25 क्वेश्चन फ्रेंड. इसमें से आपने कितना सही कर पाए डेफिनेटली कमेंट कीजिए. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. नमस्कार.